हेलो दोस्तों। आज हम लोग आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 ग्लोबलाइजेशन का ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन ये पार्ट फर्स्ट और टर्म 2 के एग्जाम्स का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के डिस्कशन के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो अभी एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमने वैसे बेसिकली क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Globalization has occurred in early period in history in different parts of the world, and it is the integrations of economy of a country in process of free flow of trade and capital. It increases the volume of trade in goods and services, creates new jobs, strengthens domestic economics, improves productivity, efficiency, etc. Right? So, what is the concept of globalization? ग्लोबलाइजेशन का मेन कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आखिर ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों को क्या चीज सीखने को मिलती है? सो फर्स्ट थिंग, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। क्या है ये कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन बेस्ड है, इंटरडिपेंडेंसी के बेस पे। एंड इट इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हैविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर एंड मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, क्या ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चर्स और मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ये जॉइंट होते हैं। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कम्युनिटीज एंड पीपल। सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन and it affects some societies more than others and some parts of the societies more than others, right? And it is also important to note that globalization is not a new phenomenon. It has been there in all times in the history, right? And according to the class 10th, same definition is there: interconnections between country to countries and communities to communities to exchange their ideas, to exchange their cultures, to exchange their capitals, and to exchange also the communities, right? So this is known as globalization. So globalization, it is about the flow of ideas, जैसे अभी बताया था, capitals, communities, and people. For better life, people go to other countries, cultures, adoptions to accept new things and thoughts. And as a multidimensional concept, it has politically, economically, and cultures manifestations also, right? Now, what is causes of globalization? What is causes of globalization? So now, what is the causes of globalization? There are the three major causes. Globalization is a historical phenomenon. So those who stress on contemporary globalization point out that the scale and speed of contemporary globalizations and make it unique. So major factors responsible for this are: number one is the technology, number two is the interdependency, and number three is the communications, right? So causes of globalizations in this topic is the technology, independence, and communications, right? So how is that? So number one is the speed of this flow has increased and technology remains as critical elements. And the innovations of the telegraph, telephone, and the microchip and internet and worldwide net, the development of high-speed transforming system, printing technology, mass media, stock market exchange, money market, these all are the causes of the globalizations, right? Now, our next topic is what is the political consequence of globalization? This is a very, very most important questions in the term 2 examinations, right? बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार एग्जाम्स के अंदर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स और पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस और इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस के बारे में क्या क्वेश्चन है? और हाँ, ये क्वेश्चन है ना आपके प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर किसी ने ग्लोबलाइजेशन के इस टॉपिक को लेकर प्रोजेक्ट बनाया ना, तो जरूर इसका वाइवा के क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, राइट। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है कि इसके क्या परिणाम हुए, क्या पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस हुए। So, what is the positive consequence of the political phenomena in globalization? पॉजिटिव के अंदर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट्स कैपेसिटी, राइट। सेकंड, इट हैज इंडीड इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी
with increased technology at the disposal of state to collect information about the citizens. With enhanced technology and communications, the state is able to rule better. Thus, the state become more powerful than before as a result of globalization. ये क्या हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए कैसे हो गए वापस समझो इसको कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी राइट इट हैज इंडीड इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी वो रिड्यूस नहीं करता वो स्टेट कैपेसिटी को इंक्रीज करता है with increased technology at the disposal of the state to collect information about the citizens. With enhanced technology and communications, the state is able to rule better, and thus the state become more powerful than before as a result of globalization. ये क्या हो गए इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो गए अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन erosions of states capacity that is the ability of the government to do what it can do. The welfare state is now giving way to a more minimalized state that performs only the core functions of maintaining law and order, the security of a nation. So it is a market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. The increased role of the MNCs reduce the capacities of the government to take decisions on their own. ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज होगी गवर्नमेंट केवल उसी को फोकस कर पाएगी स्टेट को देख ही नहीं पाएगी राइट तो ये क्या है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस उसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की अगर बात करें तो ये चीजें हम लोग मतलब देखो ये जो टॉपिक है ना ये रटने से कुछ नहीं होगा इसको समझना पड़ेगा बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको आप समझ के जितना लर्न करोगे ना उतना आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलने वाला है राइट सो इट बेनिफिट्स ओनली स्मॉल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन right while impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare number 2 kya hai they have emphasized the need to ensure institutional safeguards or creating social safety nets to minimize the negative effects of globalization they have called for a halt to force economic globalizations for its results would lead to economic run to the weaker countries some economists describe it as neo-colonialisms of the world राइट तो ये क्या है इसके ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है सेफ्टी सोशल सेफ्टी नेट्स है राइट इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये सोशल सेफ्टी नेट्स होता क्या है राइट नाउ नेक्स्ट इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है इट हैज रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर ए लार्जर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज allow each economy to do what it can do best. Number 3, it has resulted in greater job opportunities, increased standard of living, and higher growth rate in the countries. Advocates of economic globalization argue it is inevitably and it is not right to resist the march of history. राइट तो ये क्या है इसके पॉजिटिव सीक्वेंस एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको देखो पॉजिटिव के अंदर क्या है कि इट हैज रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है एंड वेल बीइंग फॉर ए लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हो जाती है दूसरा क्या है कि ग्रेटर ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट कैन डू बेस्ट अच्छे से अच्छा करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाती है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू इट इज इनविटेबल एंड इट इज नॉट राइट टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री राइट ये क्या है इसके पॉजिटिव इकोनॉमिक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा वर्ल्ड सोशल फोरम राइट अब वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है उसके अंदर उसको पढ़ने से पहले क्या है कल्चर कॉन्सिक्वेंस अब कल्चर कॉन्सिक्वेंस में नेगेटिव क्या है नेगेटिव देखो कल्चर्स का नाम आती है ऑब्वियसली ये नेगेटिव ऑप्शंस हो जाता है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर्स एंड दिस इज कॉल्ड द कल्चर्स होमोजेनाइजेशन and this uniform cultures happens to the western of American cultures so this is closely linked with the soft power hegemony that is the culture of a politically and economically dominant society leaves its imprint on a less powerful society and the world begins to look more like the dominant power which is to be. Some call it the McDonaldizations of the world with culture seeking to buy into dominant American dream. So this is dangerous not only for the poor countries but also for the whole humanities for its lead to the shrinking of the rich culture heritage.
ठीक है, इसलिए इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न साइड से सारी चीजें ले रहे हैं, आप उसका परिणाम देख ही रहे हो, राइट। अब उसके पॉजिटिव क्या है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, कल्चर वाला भी, पॉलिटिकली और कल्चर वाला पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है। इसके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी मैं इसी वीडियो के साथ बताने वाला हूँ। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस, these outside influence enlarge our choices और modify our cultures, ठीक है, हमारी चॉइसेस बढ़ा देंगे और हमारी कल्चर्स को मॉडिफाई भी कर रहे हैं ये। हेटेरोजेनाइजेशन, हेटेरोजेनाइजेशन मतलब होता है कि पीढ़ी अब ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गई। दिस लीड्स टू एडिंग मोर वेराइटीज एंड द इमरजेंस ऑफ फ्यूजन कल्चर, thus blue jeans goes well with khadi kurta, जैसे आप देख रहे हो। Thus, it makes each culture becoming more different and distinctive. This is called culture heterogenization. देखो क्या आ गया, ये पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। It makes each culture becoming more different and distinctive. This is called culture heterogenization. Right? Now, India and globalization का क्या रोल है? Colonial period, India was an explorer of primary goods and raw material and a consumer of finished goods. So after independence, we decided not to allow others to export to us so that our own producers get protections. So this is called Protagonism. And as a result of this, India had a very sluggish rate of economic development. And after 1991, जब liberalization हुआ, responding to economic crisis and a desire for higher rate of economic development. So the government dysregulated various sectors including trade and foreign investments. क्योंकि 1992 में लिबरलाइजेशन हो गया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया। नाउ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में क्या है, दोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू, देखो इसमें लेफ्ट आर्ग्यू और राइट आर्ग्यू का पॉइंट आ गया, ये अभी हमने पढ़ने वाले हैं कि ये लेफ्ट आर्ग्यू क्या है, राइट आर्ग्यू क्या है। Those on the left argue that the contemporary globalization is making the rich richer and the poor poorer. Left argue में ये, and weakening of the state leads to a production in the capacity of state to protect the interest of its poor. Critics of the right are worried culturally. They feel that the traditional culture will be harmed and people will lose their age-old values and ways. Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se as much as they are opposed to a particular program of globalization. So in 1999, at the WTO ministry meeting, there were widespread protests at Seattle alleging unfair economic practice by the powerful states. उसके लिए इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड सोशल फोरम, जो मैंने अभी बताया था ना हम लोग पढ़ने वाले, WSF is a global platform बना दिया, which bring together a wide coalition composed of human rights activities, environment, labor, youth and women. Activists oppose to neoliberal globalizations. तो WSF की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एक साथ आना, कोलिशंस कंपोज करना ह्यूमन राइट एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक्स में, लेबर में, यूथ में और वुमेन एक्टिविजम्स में, एंड अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन में, राइट। नाउ देखो जैसे मैंने बताया था लेफ्ट विंग और राइट विंग होते हैं, सॉरी। तो लेफ्ट विंग क्या है और राइट विंग क्या है। लेफ्ट विंग कहता है protests have come up from forum like Indian and social form. Trade union and farmer unions have organized protests against the entry of the multinationals, a left wing, and the patenting of certain plants like neem by the Americans and the European firms have also generated considerable oppositions. Right wing क्या है, they have objected particularly to various culture influence, ranging from the availability of foreign TV channels to celebrations of Valentine days and westernizations of the dress टेस्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये क्या है इसके लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में, राइट। सो ये था इस ग्लोबलाइजेशन के छोटे से टॉपिक का हम लोगों ने डिस्कशंस किया। अभी यहीं पे हम लोग थैंक यू नहीं बोलने वाले, अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस और इसके नोट्स की तरफ बढ़ने वाले, राइट। जस्ट 2 मिनट दीजिए और आई होप सो कि आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा कि आखिर ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपको सीधा नोट्स की तरफ कि इसमें कौन से क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। इसकी पूरे वर्कशीट से मैंने बनाई है पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट की, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बहुत जल्दी, राइट। चलिए अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, आपको आने वाला नहीं आपको, तो उसके लिए सेल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन, माइक्रोचिप्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आने का चांसेस है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ द स्टेट्स के बारे में पूछा है कि स्टेट्स ने ऐसा क्या किया है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना स्टेट्स के बारे में, वो है ये। तो इसका आंसर क्या होगा कि globalization reduce the state capacity and the ability of the governments to do what they do. Market becomes the prime concern to set down economic and social priorities. Multinational companies affect on the decision taken by the government because their own interest fulfillment also depends on the government policies. ये अभी हमने पढ़ा था, इसका नेगेटिव इफेक्ट्स हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन में, right? And the old welfare state is now giving way to more minimalized state to perform certain core functions as maintenance of law and order and the security. The state also withdraw from many of its welfare functions taking place at the level of economic and social well-being. देखो इस तरह से अगर आप लिखोगे ना पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको पूर्ण फुल में से फुल आने के चांसेस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे इसने, नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक implications of globalization and how has globalization's impact on India with regard to this particular dimension? तो क्या है इसके इम्पैक्ट्स, नंबर वन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके पॉजिटिव में क्या है, ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग वेरियस कंट्रीज, एनहांस ट्रेड इन कम्युनिटीज अमंग कंट्रीज, restrictions on the imports and movements of capital have also been reduced, ठीक है। सो ये क्या है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन has created diverse opinion all over the world, so benefit only small sections of the society. It does not have equality at par the movement of people across the globe, ठीक है। अब उसके इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट्स हुए, मोर न्यू जॉब्स में क्रिएटेड हुए, टाटा मोटर्स जैसे एग्जांपल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए, एंड क्रूशियल रोल अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर हुई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट इज WSF, वर्ल्ड सोशल फॉर्म है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टू ब्रिंग, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टुगेदर ए वाइड कोलिशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, एनवायरमेंट्स एंड वुमेन एक्टिविज्म्स, राइट। फिर क्या पूछा इसने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, काफी देर से बताने वाला था, 1 मिनट में बता रहा हूँ, कैन यू कंसेप्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एनालाइसिस द रीजंस फॉर द चेंज, 1 मिनट रुको मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्वेश्चन कौन सा है जी। ये देखिए ये आ गया ना, 4 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस पूछा, इसमें नेगेटिव एक्सेप्ट्स और पॉजिटिव एक्सेप्ट्स दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। नेगेटिव में क्या था कि ये वही वापस स्टेट कैपेसिटी, दैट इज एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू, एंड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलाइज्ड स्टेट दैट परफॉर्म्स सर्टेन कोर फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट्स में, तो क्वेश्चंस मैंने इसमें डाला है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर आप बताएं, राइट। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आपका होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट का। तो धीरे धीरे हम लोग रिवीजन सीरीज को यहीं पे शुरुआत करते हैं, और जब तक एग्जाम्स आएंगे तब तक हम टेस्ट भी ले लेंगे और उसकी सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करता है, राइट। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।